dissected as much as to the possible during the period between the harvest and consumption. Okay. So you see here to the harvesting and to the handling of the fruit at the time of to if you collect the fruit from the field, so have to send to the and processing unit or have to send to your cold storage to have to the be very careful to that is to harvest. Okay. After then to packaging is the main important concept we have to clear in the last lecture. So how can you that is to harvest and have to send to the processing units and to the market, that is to some important facts there to precaution must for the have to check the decade and fruits and vegetables. Okay. So that is very important for you. And to the have to the that is and integrated approach to days after the antithesis to the development of fruit, they are continued to have to going on the maturity, so that after the peak of the maturity they harvest the fruit. They have depend on the how much distant of your market. So that is to the some facts here to the physiological maturity, that is to the horticulture maturity or the harvesting time of every crop have to the specific harvest time, or that is nutraceutical contents they are found on that. Okay. So that is to the some flow chart you have to days after the harvested to the that is to physical maturity start to the horticulture maturity at to in the fruit sense. Okay. So here to see the tomatoes to that to the physiological maturity at the time of the harvest, at the time of hybridization to start the development of the food, that is development of food had to continue their development to maturity. After the peak of the maturity they have to the harvest, that is to horticultural maturity, and after then to fruit going on the ripening condition, the commercial maturity, and to over maturity, that is to going on the senescence conditions. Okay. So that is to that is to different stages of the passing the fruit from the unripe to the mature or mature to the ripen condition, and after then to the senescence condition. So to initial development of the fruit to the before the maturity they have to the called the physiological maturity, that is commercial maturity, that is also have to the start the change the color from the green to light yellow, after then light yellow to red or red yellow to the going on the dull color due to have to going on the senescence condition of the fruits. Okay. So what is the harvest? The fruits harvested to the early may lack flavor, okay, and to may not ripen properly. While the produce harvested to late may be the fibrous or heavy, they have very limited market life. So the level of the maturity actually the help to the selection of the storage methods, estimation of the shelf life, selection of processing operations for the value addition etc. Okay. So the maturity has been divided into the two categories, that is physiological maturity and horticultural maturity. So they have to what is the both maturity. So how can you that is to here to the types of maturity of the fruit, and that is harvesting maturity to start to here, and after then to physiological maturity and commercial maturity. So that to the peak of the maturity they have. What is the difference of all one have to the classified in the next slide, that is to here to see that cell division to start after the hybridization, that is to cell suspension and the increase the size of the fruit day by day, and at the time of maturity the full growth and all the metabolic activities they have to check they have to the full of the condition, and after then to the metabolic condition is the finished, after then to generate the ethylene to ripen of the immature starch you convert into the carbohydrates, and after then to start the ripening and to the generate the ethylene in the fruits, and the starch is converted into the carbohydrate, and after in the degradation carbohydrate convert into the alcohol. So that in the sense of the senescence condition they have to going on the aging up to the death or decay in condition. Okay. So that is to the cycle to start from the fertilization and to going on the decay in condition, that is the to the first initial stage, that is cell expansion or development of fruit, that is the physiological maturity, harvest maturity, that is to maturation, and that to the physiological maturity and converted to the senescence or aging. Okay. So here to see the what is the ethylene biosynthesis play an important role for the fruit condition. So here in the initial stage, that is to gene play an important role in the
expression of the ethylene. So in the first stage, the system 1 to have to ACS1A or 6 or ACO134 genes, they have to regulate the ACS, that is to 1 amino cyclopropane 1 carboxylene synthesis enzymes, they have to play an important role. So ACS convert into the ACOs, that is to 1 amino cyclopropane 1 carboxylate, that is oxidase, ठीक है, CaCO. So in that two, both enzymes, that is to play an important role for the regulation of the ethylene at the time of fruit ripening. Okay, so that is to receptor the protein accumulation, that is ETR4 and ETR6 have to play at the time, have to feed fruit going on the maturity condition, that day by day have to the generate the ethylene and regulate it the both enzyme, that is ACS and ACO. So here to see the diagram very clear. So rises the peak of ethylene production, blue line, okay, and that is to green line, that is the beaker of the ethylene generation. So that is to MADS1, they play an important role to check the ethylene generation, but RIN or TAGL1, that is to governed by the ACOs, that is 1 amino cyclopropane 1 carboxylic acid oxidase ACO, that is to generate the ethylene and to ripen the fruit to the pink, that is to color, that to turning to yellow to pink, pink to red, red to the post harvesting or to decayed condition. So day by day have to the increase after the maturity, have to the generate the ethylene by the ACC or ACO enzymes to have to the, they are come immediate after the same means, that is the S adenosyl and methionine. So methionine is the initial precursor, that is the quick precursor to immediate precursor of the ethylene generation. So ethylene play an important role for the ripen the fruits. Okay. So here to the physiological maturity, it is the stage when a fruit capable of further development, okay, and or to ripen when it is harvested, ready for the eating or processing. मतलब तैयार हो जाता है खाने के लिए, that is the physiological maturity. Horticulture maturity, it is referred to the stage of the development when the plant and plant parts possesses the prerequisite for the use by the consumer for a particular purpose, that is ready to harvest. Horticulture maturity means बिल्कुल तैयार हो हार्वेस्ट के लिए, दैट इज हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी, और रेडी टू ईटिंग जब खाने के लिए तैयार हो, दैट इज टू फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी. फर्स्ट स्टेज दैट इज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और मैच्योर स्टेज दैट इज कॉमर्शियल स्टेज. इसमें कॉमर्शियल मैच्योरिटी वो भी जोड़ लेते हैं, रेडी टू हार्वेस्ट और हार्वेस्ट के बाद की स्टेज दैट इज commercial maturity. Okay, so horticulture maturity, physiological maturity, horticulture maturity, commercial maturity. Mostly बहुत सारी बुक्स में दो तरह का maturity दिया जाता है, physiological maturity that is to first stage और horticulture maturity is the second stage. बस कुछ किताबों में तीन स्टेजेस मिलेंगी, फिजियोलॉजिकल, हॉर्टिकल्चरल एंड कॉमर्शियल मैच्योरिटी. ओके, दैट इज टू यूज फॉर द प्रोसेसिंग. So that is to use horticulture maturity ready for the harvest. Okay, physiological maturity means that is ready for the eating processing. Okay. Hello. Yes. अब मैं कर दिया हूं, अभी कर दिया हूं, अभी किया हूं. हाँ ठीक है ना, अभी कर दिया हूं. ओके ओके. So this is to, that is to here to discuss the physiological maturity and horticultural maturity. So in the फिर again to have to going on the last slides to have to see here the first stage of the green stage, that is to physiological maturity. इसमें एक में हमने दिखाया भी था स्लाइड में, that is to physiological maturity and to seen here to developing stage of the fruit. Okay, after the turning the color, that is to horticultural maturity, and going on the ripening condition, that is the commercial. So commercial maturity, that is to change the color. Okay, that is to till full development of the fruit, that is to physiological maturity is the horticulture maturity. After then commercial maturity and over maturity. Over maturity, that is over mature of the fruit. So here to also discuss here too, that is to physiological maturity and horticulture maturity. Physiological maturity means ready for the eating or processing. ठीक है. Horticulture maturity, that is to ready for the harvest. Harvest के लिए जहाँ तक तैयार हो जाए, that is to full development of the fruit, that is to
हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी रेडी फॉर द ईटिंग और प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाए, दैट इज टू फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। तो वो हमने आपको इनिशियल स्टेज में दिखाया था, ये दैट इज टू that from the physiological maturity you seen here to that is develop the full developed of the food, that is to physiological initial, मतलब तैयार हो जाए खाने के लिए, that is to processing के लिए यहाँ से प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। फिर कमर्शियल मेच्योरिटी, that is to also called the horticulture maturity भी कह सकते हैं उसको, after then to the over mature fruit going on the senescences, okay। So that is to here to harvest maturity, physiological maturity and to the commercial और horticulture maturity, that to mix up होते हैं या अलग अलग कह सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इसको फिजियोलॉजिकल कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में दे हैव टू डेवलप द मैच्योरिटी, आफ्टर देन टू फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी दे हैव टू डेवलप। तो यहाँ तो मैच्योरेशन देख सकते हो सेल सस्पेंशन का, और मैंने यहाँ बताया था अगेन टू हैव टू दैट ACS एंड ACO दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर रेगुलेशन द एथिलीन इन द फ्रूट, ओके। दो एंजाइम्स हैं ये जो रेगुलेशन करते हैं इनिशियल स्टेज में ग्रीन कंडीशन में। ACS दे हैव टू, ACS मीन्स हो गया 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक सिंथेटिक एंजाइम, ठीक है। दे हैव टू गवर्न द एथिलीन एंड दैट इज सेम as adenosine methionine, that is to immediate precursor of the ethylene। ACC भी ACC किताबों में दिया रहता है, ACC is the precursor of ethylene, तो methionine is the precursor of ethylene। तो वैसे कहीं पर methionine होता है, क्विक precursor में ACC होता है, और वैसे methionine is the precursor of ethylene, methionine से ही ethylene बनता है, ठीक है। तो इससे पहले ACC इससे मिथियो आपको बनेगा, ACC सेम बनेगा, सेम से methionine बन जाएगा। तो ACS is the initial stage में have to govern, they have to generate the ethylene, have to ripen in the condition of ACO, ठीक है। System 2 they are governed by ACS 1, 2, 4 और ACO 1, 3, 4, and after then ACS 1, 8, 2, 4, 6 or ACO 1, that is to enzymes, okay। The enzyme in play an important role to change the color and to change the pigmentation of the food and change the starch converted to carbohydrate और carbohydrate ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल। तो इस तरह से ये इनिशियल कंडीशन, जितने भी आपको देखा होगा टमाटर वगैरह से भी बहुत सारे लिक्वर बनते हैं और ग्रेप वगैरह होते हैं जिससे तमाम दारू वाइन्स वगैरह बनाते हैं, दैट टू फर्मेंटेड आफ्टर देन टू फाइंड द अल्कोहल। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा? अल्कोहल में, और स्टार्च किसमें टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट में। तो दैट टू द एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है पूरी पूरी, जिसमें ये सारी साइकिलिंग होती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गए। मेच्योरिटी कैन बी दैट इज डिस्क्राइब बाय द अटेनिंग द पर्टिकुलर साइज आफ्टर द टू विच रैपनिंग टेक प्लेस, ओके। So on the other hand, to ripening means the qualitative changes in the fruit after the maturity of the which is become to edible। तो here टू देख रहे हैं आपने, टमाटो इसका दिया हुआ है F1 हाइब्रिडाइजेशन से लेके 8 days आफ्टर, 12 days आफ्टर, 20 days आफ्टर, 35 days आफ्टर एंड 40 days आफ्टर। तो 35 days आफ्टर दैट इज टू that is full mature of the fruit, after that 42 that is to convert into the color, that is to 40 days after, and 60 or 45 days after that is to ripen। The ripen condition that will change the color of the chlorophyll, convert into the pigmentation to have to the change the color, and that is to ripening condition, okay। So भाई after the harvest is important, क्यों, क्या क्या आवश्यक है भाई टू नीड द हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग के बाद क्या क्या करें? That is to domestic product है are to not exported regionally or to the internationally because they have do not to meet the basic standards of the sizing, color, shape, maturity, packaging and labeling, okay। So this is to produce for the fresh market as well as to product distinct from the processing, or unfortunately that is to the result of the domestic products have to the lost market share locally or important, and to at the same time have no penetration export markets, okay। So that is further important expansion of this sector is the nearly total lack of the storage facilities or to maintain the product integrity। It means have to the suppose that आपने कहा if you have to the field in the rural areas, ठीक है, they have to know facilities of storage and transportation facility and to produce of the tomato, or you produce the strawberries there, so they have to the very perishable fruits or vegetables to have to very less of the shelf life. So if you people to transport into the send to the market to find the appropriate price, otherwise 10 to 20% they are spoiled due to have to the high temperature, or they have to the infection of the microbiality of your products, okay।
So near about 20 to 30 or 30% of the your product they have to decay due to have to the lack of facility, or have to their lack of storage, or have to the lack of transportation facility, or their processing facility. Okay, so that is to need for after the harvest to have to safely to handle the fruits from the field, and after then to clean, wash and to pack, after then to send to the market. So mostly Indian condition have to not to have a proper facilities available, due to have to 30 to 40% तक have to lost your fruits and vegetables. सो ये हार्वेस्ट इंडेसिस यहाँ पर दिया है. इंडेसिस मीन्स दैट आर साइन, नमूना या वो सिम्टम जिससे हम ये पता लगा लें कि फ्रूट हमारा पक गया है. द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल कांट बी इम्प्रूव, बट इट इज कैन बी presented when the harvesting is done at the proper stage of maturity. एक स्टेज पर आप maturity स्टेज पर आप हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो श्रंकेज हो जाएगा, that to the shrinkage in the fruit. Immature हार्वेस्ट कर लेंगे, they have to can't to develop the good aroma, can't to develop the best quality of the sugar, and to have to the starch, immature starch there also. तो ऑन दैट, तो कभी कभी पपीता तुम खाते हो तो कच्चा सा रह जाता है. दे हैव टू नो इंटरेस्ट टू टेक इन द immature fruits, have to need that to right stage of the. So first of all to know for about the exact sign for the indices on harvest indices for the every fruit. तो प्रत्येक फ्रूट का अलग अलग होता है. तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में दिया है ES1, ES2, ES3. द एंजाइम दे आर रेगुलेट द chlorophyll and starch. After that they converted to have to the mature condition. So they have to check the metabolic activity of ES1, ES2 and ES5, and after then to the start generate the ethylene through the same or ACC. They are governed by ACS or ACO. ठीक है, that is a enzymes operated and or generate the ethylene from the ACC. Okay, so here to the all greens, light greens, more green and more yellow than to green. अगेन टू दैट सीन हाउ मच. कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं वेट कर रहे हों, तो दैट इज टू मैंने और कोई है तो. सो दैट इज टू डिफरेंट स्टेजेस हियर टू सीइंग द all greens, that is to full mature stage. They turn to the color, it means that is to mature, to ready for the harvest. Harvest के लिए तैयार है. To that is to cut and to proper clean and to पैक एंड सेंड टू द मार्केट. क्योंकि क्लाइमेट्रिक फूड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैच्योरिटी के बाद इथाइलिन जनरेशन शुरू हो जाती है. इसमें इथाइलिन जैसे जनरेट होगा अंदर, तो क्या होगा, जो स्टार्च उसके अंदर होता है वो दैट कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट, और दैट फ्रूट गोइंग ऑन द सॉफ्टनेस. फ्रूट जो टाइट होता है दैट इज टू सॉफ्ट हो जाएगा, और ज़्यादा दूर तक डिस्टेंट मार्केट तक और ज़्यादा दिनों तक इसको हम स्टोर नहीं रख सकते हैं. तो जैसे बनाना है भूसाबल वगैरह से अगर इधर आता है तो ग्रीन स्टेज में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है, इसके बाद पैक करके ट्रकों में जब आता है पत्तों में लपेट के भेजते हैं, जिससे स्क्रैच नहीं हो. स्क्रैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस बढ़ जाएगा इसमें. ठीक है, तो बीच में हो सकता है सड़ भी जाए. तो मोस्टली इंसेक्ट के केले में मोस्टली आपने देखो कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं. दैट इज टू शुद्धता के लिए जाना जाता है, और शुद्ध चीज में कीड़े इंसेक्ट नहीं आते. दे आर टू स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी. सड़ जाता है ड्यू टू हैव द इन्फेक्शन ऑफ द फंगस की वजह से सड़ जाएगा, लेकिन कीड़े नहीं आते इसमें. ठीक है, तो दैट इज शुद्धता के लिए इसको जाना जाता है. प्योर होता है सबसे. ह्यूमंस फर्स्ट टाइम दे हैव टू यूज द बनाना टू हैव टू लर्नर योर द मंकी के द्वारा सीखा था कि केला कैसे खाया जाता है. मानव को तो ये भी नहीं मालूम था. ठीक है, आफ्टर दे हैव टू द फुल राइप स्टेज टू द आफ्टर द गोइंग ऑन द डिकेन कंडीशन. एक स्टेज के बाद है फ्री. तो हार्वेस्ट और डिहेंडिंग आपने जो नीचे स्केच बना हुआ है, डीलैटेक्सिंग एंड क्लीनिंग, ये वाटर में इसको पानी में डाल देते हैं तो इसके अंदर जो जूस वगैरह जिसको लेटेक्स निकलता है वो निकल जाता है. फिर इसके अकॉर्डिंग टू साइज दे हैव टू सॉर्टिंग. ठीक है, फिर एथाइलिन ट्रीटमेंट से करते हैं इफ यू वांट टू द राइट, क्योंकि क्लाइमेट्रिक फूड है नीड फॉर द एथाइलिन. और नहीं करोगे दे हैव टू ऑटोमेटिकली हैव टू जनरेट द एथाइलिन. अगर आप जैसे नहीं हम एथाइलिन डाल देंगे, नहीं डालेंगे तो पकेगा नहीं, तब भी पक जाएगा. ऑटोमेटिकली दे हैव टू जनरेट द एथाइलिन थ्रू द सेम. एथाइलिन जनरेट होगा. आपको क्विक पकाना है तो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, दैट टू रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट द एथाइलिन. एथाइलिन बनता है, लाइम बनता है. ठीक है, तो एथाइलिन लाइम होता है तो लाइम को हम बाद में यूज कर लेते हैं और ये ना अपने दूसरे कामों में, और जो एथाइलिन बनता है उससे हम फ्रूट को पका लेते हैं. एथाइलिन क्या करता है, दैट इज सॉफ्टिंग द स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट.
So that is they have two enzymes, that is ACS and ACOH play an important role for regulation of ethylene inside of the food. फूड के अंदर वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है. हाई प्राइसेस फॉर द fruits and vegetable to require improve the quality, ठीक है. फ्रेश वेजिटेबल्स होगा तो they have to find the maximum price in the market, or high quality can that is to only by the achieved through the proper grading, sorting, packaging, storage and handling of the fresh fruits and vegetables, but require a certain level of the new technology to the accomplish it. So it is need to the they are passing the different stages for the cleaning, ठीक है, to check the microbial activity on the fruits and vegetables. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो microbes रहेंगे तो they have to the contaminate their food and they have to going on the decayed condition. So it is too important for minimizing the mechanical damages. हार्वेस्टिंग के समय ये ध्यान रखते हैं कि उसमें स्क्रैच नहीं आए. स्क्रैच आ जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना. तो क्या पता चला कि सवेरे तक वो माइक्रोबियल एक्टिविटी अपना काम कर गई और पता चला सबसे पहले सड़न उसी शुरू हो गई. तो दैट माइक्रोब्स जो है एंटर टू द स्क्रैच पार्ट एंड टू एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द फूड. तो मैनुअली हार्वेस्ट करते हैं या मैकेनिकली भी करेंगे, दे हैव टू सी, हैव टू काउंट टू द डैमेज. ओके, तो रफली हैंडलिंग एंड ब्रशिंग, कभी भी फ्रूट्स के ऊपर ब्रशिंग नहीं करते. ब्रशिंग से क्या स्क्रैच आ जाएगा और कंटेमिनेशन हो जाएगा. तो दैट इज टू हैंडल, या बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है टू हैव टू द प्रोटेक्ट द fruits and during the different step to packaging houses operations. Secondly, the pack house operations should be carried out in the shaded areas. मतलब मोस्टली क्या है कि स्टोर करने के बाद शेड कंडीशन में रखते हैं. आपने फील्ड ओपन में छोड़ दिया, पता चला धूप से ही दैट इज टू स्पॉइल्ड, तो धूप से ही वो खराब हो गया, श्रिंकेज हो गया या पानी एवोपरेशन हो जाएगा तो श्रिंकेज हो जाएगा. मोस्टली कुकुम्बर के केस में ऐसा देखा जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में ऐसा देखा जाता है. इमेच्योर कंडीशन में हार्वेस्ट हो गई, दे आर 85 से लेकर के 98 तक बेटर होता है अकॉर्डिंग टू द वेजिटेबल. अगर उसमें एवोपरेट हो गया, धूप में छोड़ दिया तो एवोपरेट वाटर ड्यू टू हैव टू श्रिंकेज ऑफ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल आपका श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है. तो सेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लोकल अवेलेबल मटेरियल लाइक द सेट्स, क्लोथ लगा सकते हैं, बूबिन मैट्स लगा सकते हैं, प्लास्टिक ट्रिप्स हो सकते हैं और कन्वास शीट हो सकती है दैट विल हैंग फ्रॉम द टेम्पोररी पोल्स, कहीं भी उसके नीचे आप अपना फ्रूट्स रख सकते हैं, ठीक है. सो सेट अलोन टू कैन रिड्यूस द एयर टेम्परेचर, वो कम कर देती है 8 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिड्यूस बाय द इफ यू यूज द सेट. ओके, handling also is very important for the at the time of harvesting. So some precautions to must for at the time of handling. So first of all, to packing house operation to the precautions. So dumping and collection of the fruits is the first step. After then tree sorting, passing, cleaning, sizing, grading, bunching, wrapping, and post harvest treatment, packaging and cooling. They have to do some handling of the एट द टाइम ऑफ. तो मोस्टली स्टूडेंट आ चुके हैं सारे. तो पैकेजिंग हाउस ऑपरेशन में हम ये सारी चीज़ का ध्यान रखते हैं. पहले तो हम ऐसी जगह पर डंप करें जहाँ पर छाया हो, ठीक है ना. ऐसे अगर ओपन में डंप कर दिया तो मोस्टली उसमें से 10-15% फ्रूट खराब हो जाएंगे. फिर उसमें छांटना शुरू करते हैं, बड़े साइज के अलग कर देते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है. छांटना, सड़े हुए और डैमेज और इंसेक्ट इफेक्टेड उनको हटा देते हैं, ठीक है. इसके बाद बास करते हैं पानी में, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनमें बास करते हैं. क्लीन करते, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन वाटर का हम इसमें यूज करते हैं और दैट इज टू क्लीन द अपर सरफेस. दैट इज टू कंडीशन यहाँ पर होती हैं, डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेस्टेंस. तो डिसइंफेक्टेंट तो अंदर के लिए कंटेमिनेशन को चेक करने के लिए होता है, तो उस हिसाब से इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं. यहाँ पर डिसइंफेस्टेंस करते हैं, सरफेस पे कंटेमिनेशन है, ठीक है. उसको अगर हम हटाएंगे नहीं तो दूसरे फ्रूट में कंटेमिनेट करके जैसे ही कहीं स्क्रैच मिलेगा वहाँ पर वो जर्मिनेट कर जाएगा और दैट इज टू स्पॉइल द फ्रूट्स, ठीक है. इसके बाद क्या, बासिंग, क्लीन करने के बाद साइजिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, बड़े साइज के अलग, छोटे बीच के अलग साइज के अलग और छोटे साइज के अलग. इसके बाद बंचिंग करेंगे, उसको रेपिंग करेंगे. आप तो रेपिंग के लिए आप पेपर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, और सॉफ्ट मसलिन क्लोथ का यूज कर सकते हो, और जैसे टू चेक द contamination or check the scratching from the surface. Okay, and after then to post harvest treatment and packaging, cooling, they have to do the following precautions must follow at the time of handling. Dumping में देख रहे हो बड़े बड़े उसमें हमने कहा that is dumping, that the first step the handling of non-2H dumping. Okay, डंप करना, इकट्ठा करना, स्टोर करना, डंप करना, ठीक है.
So that is, it should be done gently enter using the butter or dry dumping, bed dumping, or to can be done by the immersing the produce in the butter. Okay, so it is to reduce the mechanical injury or brushing, or that is abrasions on the fruits, or since butter is more gentle to introduce. So the dry dumping is done by the soft brushes, or that is to fit it on the slopes or the ramp or the moving conveyor belts. Okay, so it will help to the removing the dust and dirt on the fruits. That is to the function of the dumping. ठीक है. आफ्टर देन टू प्री शॉर्टिंग में क्या है, इसमें जो इफेक्टेड फ्रूट्स होते हैं उनको हम निकालते हैं. सो दैट इज टू प्री शॉर्टिंग, इट इज टू डन रिमूव द इंजर्ड, decayed or mishappen fruits. Okay, it will be save energy and to money, because it's to that is cost will not be handled or cooled back, or the transported or removing the decaying food are the especially important. Okay, so that is to, because they have will limit to the spread of the infection to the other healthy fruit during the handling. So the pre-sorting is the must for the safe. The fruit have to the find the maximum mass in the market. Okay, so bashing and cleaning is the another operations at the time of the after the harvest. So bashing and cleaning means that is to bashing with the chlorine solution. 100 to 150 ppm chlorine solution need for the disinfectants of your fruits. Okay, so it can be used for the control the inoculation, but up to during the pack house or operations, or for the house operation, or to best result for the bash solution. pH solution, that is to slightly acidic solution need for to killing the microbial activity 6.5 से that is to 7.5 के बीच में. तो 7 तो न्यूट्रल होता है, तो मोस्टली एसिडिक कंडीशन में रखते हैं, लाइट एसिडिक 6.5 इज द बेस्ट वन. तो मैंगोज बनाना शुड बी हैव टू बाश टू द रिमूव द लेटेक्स. मैंगो बनाना के केस में दैट इज टू मैंगो में रेजिनस केनाल्स होती है, आपको मालूम है, जिसको चेक बोलते हैं. वो आपको जब भी हो जाए उसको उसकी प्रेजेंसी हैव टू रेजिनस कैनाल हैव टू द spot showing on the spot on the surface of the fruits. Okay, so kiwi fruits are also that to dry clean to brushes after the coring in or storage. So sizing and grading also the important steps to at the time of harvesting. So sizing or grading too can be done manually or by automatic machines or grading lines, or to sizing grading can be done subjected to the visually with the use of standard size gauges. So round produce to unit can be easily graded by the using the sizing rings also have to in this steps. Okay, एक बार देख लेते हैं, कोई और तो नहीं आया. After then to grade that is design that is designations and to the quality of the fruit. They have to the different grades there to the large grade, large sizes, medium sizes, or short sizes or small sizes. So minimum requirement are to the fruit should be clean, round, free from the any visible foreign matters. Okay, so fresh is to appearance the free from the pests, or they have to damage caused by the pest or diseases, or they are free for any foreign smells or to taste. Okay, so any foreign insects they have to, or any foreign diseases they have to remove from at the time of grading. Okay, so that the methods of pre cooling में that is वो रूम कूलिंग कर सकते हो, फोर्स्ड एयर कूलिंग हो सकती है, हाइड्रो कूलिंग हो सकती है, वैक्यूम कूलिंग हो सकती है, और दैट इज टू पैकेजिंग आइसिंग कर सकते हैं, दैट इज टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, सो दैट इज टू रूम कूलिंग में रूम टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, दैट इज टू लो कॉस्ट एंड स्लो मेथड होता है कूलिंग. एंड दिस मेथड टू प्रोड्यूस इज सिंपली loaded into the cool room, and cool air is to allow to that circulate among the carton and sacks and bins. Okay, तो इसमें क्या होता है, लोकल एम्बियंट टेम्परेचर होता है और फैंस लगे होते हैं, उसके द्वारा हम इसको सर्कुलेट करते रहते हैं, जिससे ये टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज नहीं हो. इनसाइड आपको मालूम है जितने पुराने जो घर होते हैं उनमें टेम्परेचर दे हैव टू लो ड्यू टू आउटसाइड, ड्यू टू हाई मॉइस्चर होता है, or they have to the temperature control temperature होता है, circulate air होती है, air also have to the factor to the reduce the temperature inside of the room. Okay, so the advantage is क्या, produce can be cooled and to store at the same room, thus have to save the handle cost.
हैंडलिंग कॉस्ट बच जाती है, इजीली हैव टू द लेबर कॉस्ट बच जाती है, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द प्री कूलिंग इक्विपमेंट जो एक्स्ट्रा कूलिंग का कॉस्ट आता है वो बच जाता है। शूट फॉर द क्रॉप विशेष टू मार्केट विच सून आफ्टर द हार्वेस्ट, ज़्यादा दिनों तक रूम में नहीं रख सकते हैं, 2-3 दिन आप रख के उसके बाद सेंड टू द मार्केट। क्या पेरिशेबल क्रॉप्स हैं, दैट इज टू हैव टू हाई कंटेंट ऑफ द वाटर इज देयर, तो यू नो वेरी वेल टू वाटर इज द मीडियम फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो डिसएडवांटेजेस में इट इज टू स्लो मेथड ऑफ द कूलिंग होता है, बहुत स्लो मेथड होता है, टू हैव टू नॉट टू यूज एनी एनर्जी, so space requirement for the room cooling are more compared to the storage, so unsuitable for the packaging। ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है स्टोर करने का, बट ये बने 1-2 दिन तक चल सकता है, जैसे मैंगो केस में, सिट्रस केस में, मैंगो ये हम स्टोर कर सकते हैं, एप्पल के केस में स्टोर करके रूम टेम्परेचर पर आफ्टर देन टू सेंड टू द मार्केट, फिर मार्केट में भेज सकते हैं। ठीक है, फोर्स्ड एयर कूलिंग में क्या होता है, दैट इसमें एयर को पासिस किया जाता है, फोर्स किया जाता है टू कूलिंग द टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द कार्टून्स। ओके, so that is to forced air cooling is to mostly used for the wide range of the horticulture produce. Okay, so this is to the fastest method and pre-cooling. So forced air cooling pulls or pushes air through the vents holes in the storage containers. Okay, so in this method to uniform cooling of the produce came and achieved if the stacks to pallet bins are properly alignment. So that is too much for the force the air inside of the cartoon and to cool the your fruits and vegetables. What is the object, why to need the cooling, you know, low temperature is to check the contamination or microbial activities to need for the cooling। Okay, कम टेम्परेचर से माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है, चेक होती है या रुक जाती है, इसीलिए हम कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। जितने भी स्पॉइलियस होते हैं हाई टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है, कंटामिनेशन होता है, तो दैट इज टू जनरेट द एनर्जी, ऊर्जा CO2 बनता है, ठीक है, दैट इज टू in low temperature they have to check the contamination। Okay, hydro cooling क्या होता है, hydro cooling that is to use the cold water in the old or effective cooling methods used for the quick cooling or the wide range of the fruits and vegetables। So before the packaging for the package commodities it is too less used because of the difficulty in the movement of the water through the containers or because of the high cost involvement in the water tolerance containers। Okay, so that is to this method is to cooling not only to avoid water loss but many even add water to the commodities। So the hydro cooling normally used are the two types, shower types, or that is to first is the shower type। So in this type of the hydro cooler cold water is used or pumped into the air, into the tank or into the footing material। So due to the cold water they have to the microelectricity to ceased। Okay, so an overheaded perforated pan which is to produce a shower over the produce which is maybe in the bins, boxes, or the loose on the conveyor belt passing the beneath। Okay, so the water leaving the produces may the filter to the remove the that is defreeze then to the passed over the refrigeration coil where it is to recoiled। Okay, so this process is to only to purpose for the check the contamination of the microbial activities। ठीक है, on that cool temperature they have to the metabolic activity also the slow। That is second is to the immersion type is the activity that is in this type of the hydro cooler this is to produce a brought in the contact with the cold water by the using the conveyor, the flume type or by the lowering ones or by boxes in the tank of water which is to continuously cooled by the mechanical refrigeration system। तो ठंडे पानी के थ्रू पासिस करते हैं फ्रूट्स को ड्यू टू हैव टू द कंटामिनेशन ऑफ द फ्रूट्स ऑन द सरफेस दे हैव टू द चेक बाय द कोल्ड वाटर। ठीक है, तो दिस इज आल्सो द मेथड दे हैव टू मोस्टली द लार्ज स्केल दे हैव टू डन। एडवांटेजेस क्या है दिसका, दैट इज टू लेस एनर्जी इज यूज्ड इन द कंपेयर टू द फोर्स्ड एयर कूलिंग। हाइड्रो कूलर कैन बी इजीली integrated into the packaging operation and become to step within the simple packaging lines। Okay, so moisture loss does not to take place or that is to disadvantages क्या है, most of the packaging done tolerate wetting। so ये पानी होता है wetting रहता है that to the that अगर if you have to the scratch on there to the contamination chances।
So base layer of the some fruit like pear, plum, apple are removed by the using spray, जिसमें वैक्सिंग करके हम उसकी रेस्पिरेशन और इवोपरेशन वाटर को चेक करते हैं. तो दैट टू दे हैव टू, अगर पानी में हम उसको ले जाएंगे तो हैव टू द बैक से दे हैव टू डिस्कार्डेड फ्रॉम द फूड, हैव टू चेक द सेल्फ लाइफ. तो उसकी वजह से उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी. तो बैक्स कोटिंग वाला फ्रूट फंडा यहाँ पर नहीं लग पाता है, तो हम बैक्स से जो फ्रूट है उनको हम इसमें प्रोसेस में यूज नहीं कर पाते हैं. हॉर्टिकल्चर प्रोसेस सुटेबल फॉर द हाइड्रोकूलिंग आर द मैंगो, पीच, cherry, and asparagus is very good for the hydrocooling. Okay, so that is immersion type of hydrocoolers that usually take the longer time to cool produce than the sewer type. So generally that is a small quantity chlorine water they have to use for this one. Also the best one for the check the contamination on the fruits, or the chemical are added to in the water to sanitize it. और या फिर हम ये क्लोरीन वाटर को पानी में ही मिला देते हैं जिससे उसकी कंटामिनेशन चेक हो जाती है. ठीक, आफ्टर देन इसको बाहर निकालने के बाद पानी उसका सूखता है, इसके बाद आफ्टर देन टू पैक एंड सेंड टू द मार्केट, फिर ये प्रोसेस हो जाती है. So hydrocooling water treatment में that is also that surface of the bit commodities to provide an excellent site of the disease or threats. So typical hydrocooling is water is treated with the chlorine to minimize the level of the decay of producing the organism. Okay, so chlorine in the forms of the hypochlorines. हाइपोक्लोरिक एसिड होता है या सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, दो सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन दे आर यूज्ड इन द हाइड्रोकूलिंग में. और आफ्टर द गैसेस क्लोरीन आल्सो दे आर यूज्ड फॉर द चेक द कंटामिनेशन ऑन द फूड्स, और दे हैव टू द लेवल ऑफ 50 to 100 ppm दे आर यूज्ड फॉर द गैसेस क्लोरीन. या तो गैस फॉर्म में क्लोरीन का प्रयोग करें या बेड फॉर्म में एसिड को हम कितने में 100 से 150 ppm में हम पानी में ही मिला दें, तब भी हमारा कंटामिनेशन चेक हो जाएगा. Vacuum cooling may have to create the vacuum inside of your cold storage to have to check the contamination. So the vacuum cooling take place to by the butter vaporization from the product at the very low air pressure. Okay, so in this method to air is pumped out from the larger steel chamber and which the produce to the loaded for the pre-cooling. So removal of air result in the reduction of the pressure of the atmosphere around the produces, or which further lower with the boiling temperature of its butter. इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, एयर कूल एंड आफ्टर देन टू हॉट, दैट इज टू कितना लाइक लिस्ट ऑफ द 6 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द कूलिंग टू मस्ट फॉर द चेक द कंटामिनेशन ऑन द फूड्स. ओके, तो एडवांटेजेस क्या है इसका, दैट इज टू पैक द प्रोड्यूस कैन बी कूल्ड ऑन द पैक और अलाउ टू मॉइस्चर ट्रांसफर, or fast and uniform cooling take place vacuum cooling में. Okay, so most energy efficient methods to use for by this method. Disadvantage, high capital cost is the expenditure on this method and produce losses more moisture through this process. तो वैक्यूम प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आपने फ्रीजर होता है, फ्रीजर में क्या होता है, ये सिस्टम होता है, उसमें मॉइस्चर कंटिन्यू दैट रिड्यूस. अब सब्जी 2-3 दिन धरो तो अपने आप सुखड़ जाती हैं, कैन हैव टू द इवोपोरेट द वाटर फ्रॉम द वेजिटेबल एंड कन्वर्ट इनटू द आइस फॉर्म, वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वी हैव टू, दैट इज द लॉस. So to overcome the more loss of the butter from the produce, another method to butter spraying vacuum is to use. So modification of the vacuum cooling is called the hydro vac cooling, that is to use. Okay. So here to packaging the icing or ice packaging to also the another method to recent method in some commodities, crushed or flaked to ice is packed along with the produce for the fast cooling. Okay. So again to have to check any student on the bed. So that to no one to have to hear. So the however it is to ice comes, or that is to in contact with the product, it is to melt and the cooling rate slow considerably. So that is ice keeps the high relative humidity around the products, or the packaged ice may be to finally crushed ice or flex ice or the slurry of the ice they have to use for the fall down the temperature inside of the your cold store or inside of the cooling system. So packaging icing can be used only with the butter tolerant or non-chilling sensitive product, but to butter tolerant packaging to best fiberboard or plastic or goods they are used for in the systems. Okay.
So vaccine of the fruits and vegetable. Vaccines also that play an important role for the increase the shelf life of your food. Vaccines to check the evaporation of the food. Evaporation means that they have, you know very well, to fruits have to found the lenticel cells. They have to direct evaporate butter from the lenticels. So if you vaccine on the food to check the evaporation, it means they have to the increase the shelf life through this process. Secondly, they have to check the regeneration or respiration of the food due to have to the check the ethylene production due to have to increase the shelf life. Okay, so the best emulsion is dilution with the cold butter and to use for the dipping the fruit on the vegetables. So the dip कर देंगे after then क्या होगा, lenticel cells they are closed due to have to the wax. Okay, so enhance the shelf life to the protect fruit from the fungal attack and reduces desiccations and to weight loss. So simple and economical method है, that is to various fruits like oranges, vegetables and spices like ginger can be best to the increase the shelf life. Okay. So how Bex कैसे act करता है? You know very well to the on the fruits have to the lenticel cells. They have to lenticel cells play an important role in the respiration and control the temperature of the fruits. So the Bex is to coat it on the fruit, that is to check the spores of the lenticels. So here to see here the two plates there. So one plate, the first plate have to the no wax, second plate have to the wax. Okay, so light film of the wax to coating on the fruit to check the evaporation and check the respiration and check the ethylene production due to have to increase the shelf life of your fruits. So all the fruits and vegetables are that is to covered naturally in the cuticle, that is to barrier of the moisture loss. क्यूटिकल आपने देखा होगा बहुत, जैसे एप्पल के केस में बहुत ग्लॉसी क्यूटिकल होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत दिनों 6 महीने तक आप अगर ऐसे दुकानों पे देखो और महीना 1.5 महीना तक ऐसे सेब रखे रहते हैं दुकानों पर, और वैसे एम्बिएंट टेम्परेचर में तुम 6-6 महीने तक रख सकते हो कोल्ड स्टोर में इसको, तो इसमें क्यूटिकल पाई जाती है, बहुत बैक्सी है, नेचुरल बैक्स इसके ऊपर होता है एप्पल के केस में, ठीक है। तो however some water vapors can be moved through the pores, that is cuticle, okay, or micro cracks in the cuticle. So during the course of the waxing, a tightly adhering thin film to that is to coating substance is applied to the surface of the fruit. So the wax coating blocks the pores and cuticle, which is to significantly reduce the amount of water vapor loss. तो वाटर वेपर नहीं आएगा तो उसका लॉस नहीं होगा, दैट इज टू आल्सो हैव टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, और क्या होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एथाइलिन नहीं बनेगा, एथाइलिन बनने से क्या होगा, आपका फ्रूट पकेगा नहीं, हैव टू इफ यू सेंड टू द फार्दर मार्केट में, आप जैसे फार्देस्ट मार्केट में भेज सकते हो इसको, ठीक है। वैक्सिंग फ्रूट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो द वैक्स लेयर रिस्ट्रिक्टेड द गैसेस इन इंटरचेंजेस, गैस को इंटरचेंज करती है वैक्स, ठीक है। तो एयर इन द इंटरनल कैविटी हैव टू द चेक थ्रू द वैक्सिंग। इट इज द, यहाँ पर देखो एप्पल का एक फ्रूट रखा हुआ है, इसको चाकू की सहायता से इसके ऊपर जो कोटिंग था दैट इज टू नेचुरल वैक्स को निकाला गया है, टू द सम फ्रूट्स हैव प्रोवाइड द नेचुरल वैक्स, ड्यूटी हैव टू चेक द लेंटिसल सेल्स। तो ये केस सेब के केस में इट इज टू नेचुरल वैक्स नॉट टू केमिकल, दैट इज टू मेक फ्रूट शाइनी एंड प्रोलॉन्ग देयर शेल्फ लाइफ। तो इसको दिखाया गया है कि किस तरह से हम नेचर भी फ्रूट को लंबे समय तक स्टोर कर सकती है। दे हैव टू प्रोवाइड जनरेट द बैक्स, ठीक है, वेजिटेबल बैक्स ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट्स, ओके, दैट इज टू नेचुरल बैक्स, उसको हम नेचुरल बैक्स कहते हैं। दैट इज नो बैक्स एंड बैक्स। अब दोनों में अंतर फ्रूट में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने दोनों की फ्रूट की शाइनिंग दिखाया हुआ है, ठीक है। वैक्सी फ्रूट दैट जो हाईली शाइन कंपेयर टू द नो वैक्स। तो मार्केट में भी लोग वही फ्रूट लेते हैं जिसमें चमक ज्यादा होती है, जो दिखने में अट्रैक्टिव होता है। तो नेचुरल वैक्स जो होती है, जो आपके सेब के केस में वो नेचुरल वैक्स होते हैं, कपड़े से भी आप बात करेंगे दैट इज वेरी क्लीन, वो चमकता हुआ देगा। वैक्सिंग आप अपने आर्टिफिशियल वैक्सिंग कर देंगे तो और शाइनिंग हो जाएगा, टू फाइंड द मैक्सिमम रेट इन द मार्केट। So that is to different waxes available in the market, types of waxes यहाँ पर हमें बताया गया है। वेजिटेबल waxes में that is the एक आपने देख रहे हो वेजिटेबल waxes में कर्नोवा वैक्स है, कैंडेलेरा वैक्स है, एंड दैट इज टू शुगर केन वैक्स है, पाम वैक्स है, इस्पार्टो वैक्स है, जापान वैक्स है,
ओरिकुरी बैग्स है, ये वेजिटेबल बैग्स हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। एनिमल बैग्स में 20 बैग्स है, या मधुमक्खी का में जब शहद खाते हो तो शहद जो मधुमक्खी जिसमें खट्टा करती है वो बैग्स के उसके क्यूब्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें स्टोर रखती है। तो जब शहद निकाल लेते हैं तो उसका जो बैग्स बचता है उसको हम डिफरेंट यूज में यूज करते हैं। और दैट इज इस पर मेसिटी बैक्स भी होता है, सेलेक्ट बैक्स भी होता है जो एनिमल से निकलता है, ठीक है। मिनरल एंड सिंथेटिक बैक्स में जैसे, और जो शेरिट होता है जो इसको हम वो करते हैं लेमिनेशन फोर्स पर, मोन्टन बैक्स होता है, सिंथेटिक बैक्स होती है, पॉलीइथाइलिन्स आल्सो प्ले एज ए रोल ऑफ the bags, so that to all the bags have to play an important role to check the evaporation of the fruit and increase the shelf life of fruit, okay, that is to this one. तो हियर टू दैट इज एडवांटेज ऑफ बैक्सेस, क्या एडवांटेज है, दैट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ फ्रूट, बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। रिड्यूस द मॉइस्चर लॉस बाई 30 to 50%, मॉइस्चर नहीं जाएगा, टू रिटार्ड द बिल्टिंग सिबलिंग नहीं होगी, पानी उड़ जाएगा तो सुकड़ जाएगा फ्रूट, ठीक है। हील्स माइनर इंजरीज, जो कहीं स्क्रैच भी फ्रूट पे कहीं आ गया है तो उसको बैक्स उसकी लेप हो जाएगा तो वो इंजरी को भर देगा, तो कंटामिनेशन के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रूट फ्रॉम द माइनर इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं बैग्स के अंदर वो लिंक कर नहीं पाता है तो उसको इन्फेक्शन से बच जाता है। प्रोवाइड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर इन द इंक्रीज सेल्फ लाइफ और एक्ट कैरियर फ्रॉम द वेरियस केमिकल, that is to also the advantages of the Bexis, okay. So that is to the here to see the some fruits with the Bexis fruits, okay. Packaging also the play important for the increase the shelf life of the product. So a coordinated system of the preparing goods from the transport, distribution, storage, retailing and to end use, so that it means of ensuring the safe delivery to the ultimate consumers in sound conditions at the minimum cost, that is to main aims of the packaging, okay. तो रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड पैकेजिंग शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, शुड बी हैव टू सफिशिएंट स्ट्रेंथ इन compression with the against impact into vibrations, so should be stable during the entire distribution chains, or should be compatible with the automatic packaging filling handling machines or mechanical filling systems, okay. So should be facilitate especially treatment like the pre-cooling, should have to consumer appeals, should have to easily printable, should have to cost effective. The all the have to the good packaging requirement need for the at the time of packaging, okay. So packaging material and packaging have to the, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था पैकेजिंग के बारे में। So materials for the packaging they are used for this, wood में boxes है, bins है, trays हैं, barrels, pallets, they are used by the wood and the wood पैकेजर होते हैं, wood के बने हुए बक्से होते हैं, बॉक्स होते हैं, बिन्स होती हैं, ट्रेस होती हैं, they are used for the ट्रांसपोर्टेशन। जूट कनवास होते हैं, सेक्स होते हैं, पेपर एंड कार्डबोर्ड्स होते हैं, दैट इज लेनर्स होते हैं, बॉक्सेस, ट्रेज, प्लास्टिक में रिजिड प्लास्टिक होती है, क्रेट्स होते हैं, पैलेट्स होते हैं, ट्रेस दे आर यूज्ड। फ्लेक्सिबल में फिल्म, सिंगल एंड मल्टी लेयर फिल्म्स होती हैं जिनको हम पैकेज में यूज करते हैं, और पॉलीस्टीरीन बॉक्सेस होते हैं, ट्रेस होती हैं। कंबाइंड मटेरियल्स में CFB बोर्ड्स होते हैं, प्लास्टिक्स होती हैं। CFB have to almost replace wood and to jute, and it is to consider as most important packaging material. So they are used for the your food safe from transportation. पेपर बॉक्सेस देख रहे हैं यहाँ पर और पॉलीथैलिन बॉक्सेस आप दोनों ही देख रहे हैं। तो एक बार हम और देख लेते हैं, कोई अगर एनीवन स्टूडेंट इन द मीटिंग, नो वन हैव टू द मीट, ओके। सो हियर टू RTS है, तो ये RTS क्या है, प्रिजर्व है, फूड प्रिजर्व है, जब प्रिजर्व है दैट इज टू पैक इन द पॉलीथैलिन्स। तो प्लास्टिक बॉक्सेस में आप कुछ स्ट्रॉबेरी वगैरह हैव टू पैक्ड इन द प्लास्टिक बॉक्सेस, ये पोर्ड प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं, एयरेशन होती रहती है, दे हैव टू शिफ्ट द स्ट्रॉबेरी। आप ऐसे लग रहा है कि अभी फील्ड से आया मैं तुरंत, उसको मार्केट वैल्यू 10-15 रुपए ज्यादा सिर्फ पैकिंग की वजह से 10-15, और पैक मटेरियल कितना का होता है, 1-1.5 रुपए का, 1 रुपए कॉस्ट आती होगी पैकेजिंग की, एक भी नहीं आती होगी, लेकिन उसके बदले में 10-12 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। तो दैट इज टू लुकअप होना चाहिए, दैट इज अट्रैक्टिव, उसका कलर लिखा हो, बोल्ड में लिखा रहता है, और उसका एक्सपायरी डेट और ये प्रिंट वो सारा न्यूट्रिटिव वैल्यू सब लिखा होता है, दैट टू द ओनली द पर्पस फॉर द फाइंड द मैक्सिमम प्राइस इन द मार्केट। फ्रेशनेस दिखाई देता है एकदम और सेफ होता है, ठीक है। So questioning materials, they are questioning material that is to
कशनिंग मटेरियल, आप कशन का मतलब समझते हो क्या होता है? कशन का मतलब आपने कभी सोफा के ऊपर कशन लगा देखा है? कशनिंग मटेरियल सपोर्टिंग मटेरियल होता है, दैट इज टू सपोर्टिंग करने के लिए होता है। कशनिंग में कशन, कसन शब्द जो है ना कशनिंग से उसी से बना है। तो ड्राई ग्रासेस है, पेडिस्टा है, लीव्स है, शॉर्ट स्टेप, पेपर्स हैं, thread stitches are used in the cushioning material for packaging fruits and vegetables. Okay, so that is to, it should be dissipate to the heat of the respiration of the products. गर्म से बचाता है, स्क्रैचिंग से बचाता है, ठीक है ना, और कूल भी रखता है फूड को, जिससे वो उसका लॉन्ग सेल्फ लाइफ बना रहा है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन, शुड बी फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। ओके, so that a molded pulp tray and to honeycomb portions of shell pack are used for the, that is to replacing the cushioning material. तो सपोर्टिंग मटेरियल होता है, आप तमाम सेव वगैरह देख रहे होंगे नेटेड मटेरियल में पैक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्क्रैच नहीं होगा तो वो लंबे समय तक रखा रहेगा। स्क्रैचिंग आ जाए तो हैव टू चांस द कंटामिनेशन, ठीक है। पैकेजिंग टाइप्स में बैग्स, सैक्स हो सकते हैं, बोबिन बास्केट्स हो सकती हैं, वुडन फील्ड बॉक्सेस होते हैं, दे हैव टू यूज फॉर द पैकेजिंग टाइप, ठीक है। प्लास्टिक फील्ड बॉक्सेस दे हैव टू आर स्ट्रॉन्गर, ड्यूरेबल होते हैं, दे आर टू मेड फ्रॉम द मोल्डेड पॉलीविनाइल क्लोराइड्स के बने होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथाइलिन के दैट यू मेड अप। तो मैंने पैकेजिंग में बताया था। पैलेट बॉक्सेस होते हैं, दे आर मोस्ट कॉमनली बेसिस ऑन द स्टैंडर्ड साइज फॉर द यूरोपियन पैलेट और 1 by 1.2 मीटर के होते हैं, ठीक है। तो 500 किलो तक वेट हैव टू स्टोर पैलेट बॉक्सेस में। और फाइबर बोर्ड बॉक्सेस होते हैं, बी बॉक्स होते हैं, दे आर टू मेड फ्रॉम द आइदर लेमिनेटेड और मोर कॉमनली corrugated fiber boards, they have to use this one. Okay, so they may be used for the directly filled packaging or the produced or transported packed houses. So here to see the pallet boxes आप देख रहे हो, फाइबर बोर्ड बॉक्सेस हैं, बुबिन बास्केट्स हैं, वुडन बॉक्सेस हैं, बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं उनमें हम ले जाकर इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसलिए होते हैं कि इससे क्या होता है, इसके अंदर हम फूड्स को रखेंगे, दे हैव टू सेव फ्रॉम द हॉट टेम्परेचर, दे आर सेफ फ्रॉम द कंटामिनेशन, दे आर सेफ फ्रॉम द स्क्रैचिंग, ठीक है। तो इजीली टू दे आर ट्रांसपोर्ट, इजीली रख सकते हैं, उठा के जगह जगह दूसरी जगह रख सकते हैं, तो हैव टू प्रोटेक्ट योर फूड मटेरियल। So let us to sum up that post-harvest handling is to final stage in the processing of producing the high-quality fresh produce. Okay, so being able to maintain the level of freshness from the field, from the dinner table, presents many challenges. A grower who can meet the challenges, so that to will be able to expand his or her marketing opportunity and will be better able to compete in the marketplace. So that is to let's sum up of this post harvest handling of the fruits and vegetables. Okay, so some books they are for the post harvest technology horticulture crop by author R.C. Upadhyay की है book है, very important है, and that to the post harvest handling of fruits and vegetable by handbook है ये, that is to author by the that A.S. that की है Mahajan and BBC, that is to wrote this book in 2000 में। और भी इसमें कई ऑथर उन्होंने डाले हुए हैं। तो हैंडबुक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव टू द परचेज और हैव टू द सीन इन द लाइब्रेरी। तो इफ यू हैव द लैप्ट ऑफ टाइम टू गो टू द लाइब्रेरी, इफ यू हैव टू ऑफलाइन क्लासेस, जब भी ऑफलाइन क्लासेस आपको मिले तो आप लाइब्रेरी में जरूर जाया करो, तो ए लॉट ऑफ बुक्स आपको देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये नेचर में आपको, अगर आपको अच्छा आपको लाइफ को जीने को, तो सभी लोग जी लेते हैं, अच्छे से जीने में उसमें थोड़ा सा वो होता है। एनी क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हो आप मेरे से, एनी क्वेश्चन रिलेटेड बिजनेस कुछ पूछना है आपको, मोबाइल से पूछ सकते हो, नंबर सभी के पास होगा मेरा। राहुल, कुछ इसमें टेक्निकल है माइक में जो नहीं ले रहा है, ठीक है, वन साइड सिस्टम बनाया हुआ है। आपको सुनाई दे रहा है? हेलो राहुल, yes, उधर से अनम्यूट करके बताओ, आवाज आ रही है? हेलो राहुल। यस सर, सबको आ रही है आपकी आवाज। तो हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर आवाज आपकी। अब इसमें क्या है, बड़ा दिक्कत है, तो ठीक है आप जो ओके, तो इसको एक बार कोर्स आपका पूरा हो गया है, और मे बी अगर आगे नेक्स्ट वन टू रिवाइज द कोर्स। ओके,
तो माइंड कोर्स तो में। आपका पूरा हो गया, प्रैक्टिकल आप मैंने डाल दिए हैं, प्रैक्टिकल भी आप बना लीजिए। और 9 कुछ तो उसने पिछले जो लास्ट टीचर था उसने पूरा किया होगा, और 8-9 प्रैक्टिकल मैंने ही आपको अभी दिए हैं। उस तरह से आपका 12-13 प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर कोर्सेज। तैयार करके आप आ जाइए, ठीक है। और एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव अभी एग्जाम के लिए पेपर के लिए बनाया है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है।